Hi everybody, welcome to the Export Import Business Management. In this session, I am going to explain you how to obtain the ISC code on DJP website. Friends, there is a reason to bring this session because DJP issued a trade notice on the end of the June this year. What it is saying? It is saying the launch of new DJP platform and digital delivery of ISC related service. Please note friend, DJP ने अपना वेबसाइट चेंज किया हुआ है. Okay. Now they are bringing the digital deliveries of all licenses and permissions. Now they are moving from the phase manner. तो पहले उन्होंने क्या किया, द आईएससी एप्लीकेशन प्रोसीजर को टोटली चेंज किया, उन्हें नए प्लेटफॉर्म पे लेके आया उसको. Okay, they will in phase manner they will bring all the application advanced license, MEIS, EPCG, all the license they will bring on the new platform. तो पहले स्टार्ट उन्होंने आईएससी कोड से किया है, तो आईएससी कोड के लिए न्यू प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है यानी उसके ऊपर एप्लीकेशन करने का प्रोसीजर इज टोटली डिफरेंट माय फ्रेंड्स. ओके, तो इसलिए मैं ये नया सेशन लेके आया, हाउ यू हैव टू ऑब्टेन द आईएससी कोड as per the new procedure. This session will give you a practical approach, will tell practicality how to apply the ISC code on the DGFT platform. Okay friends, now stay with us to understand the procedure. How to apply for the ISC code. Now the system of applying ISC code and procedure has totally changed. First let's understand what is the ISC code. ISC code क्या होता है? The foreign trade policy lays down ISC number as basic eligibility criteria to become exporter or importer. Without having a valid ISC number, the custom authorities will not allow to import or export. It is allowed by regional. It is allotted by regional authority, that is Joint Director General of Foreign Trade (DGFT). देखो आपके पास आईएससी कोड होना बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, वो नहीं रहेगा तो आपको कस्टम अथॉरिटीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए अलाउड ही नहीं करेगा. and ये इश्यू कौन करता है? DGFT, जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. ओके, एंड एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ आईएससी नंबर शैल बी मेड बाय रीजनल और हेड ऑफिस ऑफ द एप्लीकेंट. मतलब आपका कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो, नहीं तो रीजनल आपका ऑफिस जो भी है, वो दोनों में से कोई भी उसको अप्लाई कर सकता है एक्सेप्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और सीजर यूनिट टू कंसर्न आर इन ANF2F. अभी ANF2F इट इज नाउ इट इज ऑनलाइन. Only one ISC will be issued allowed against single PAN number. An ISC number allotted to an applicant shall be valid for its branches, division, units and factories. What is mean that? Means you will one ISC is equal to one PAN. मतलब आपको एक PAN के ऊपर एक ही ISC issued किया जाएगा. An ISC number issued is valid for all the branches, division, unit, factory. मतलब वो जो कंपनी के जो ब्रांचेस है, डिविजन्स है, यूनिट्स है, फैक्ट्रीज है, वो सब एक ही आईएससी यूज कर सकते हैं जो विच इज अलॉटेड टू देयर रजिस्टर ऑफिस और हेड ऑफिस. उनके लिए सेपरेट आईएससी नंबर इश्यू नहीं होएगा, बिकॉज दे विल हैव द सेम पैन नंबर. ISC number so allotted will be required to be mentioned on all the application correspondence with the regional authority, shipment document, import export documentation. ये ISC दिया हुआ allotted that has to be used for all the documents. This is a unique code allotted to every entity that has to be mentioned each and every document. आप कस्टम में डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, आप इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में दे रहे हो, आप FIO में दे रहे हो, किधर भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, you need to mention this ISC code. Nowadays, DGFT issue the ISC code same as PAN number. Previously, what is to happen? The DGFT is to issue is their own series of ISC codes. Now this practice has been stopped. अभी जो PAN number है सेम ISC नंबर करके दिया जाता है, बट यू नीड टू अप्लाई टू DGFT. पैन नंबर सेम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप DGFT को अप्लाई नहीं करोगे. You have to apply DGFT and DGFT will issue the ISC code as same PAN number. Okay. See, application will go three ways. There are three stages.
फर्स्ट रजिस्टर विद DGFT एंड क्रिएट योर लॉगिन। अभी आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा DGFT के साथ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब रजिस्टर करना पड़ेगा। सी ये लॉगिन और इसका कुछ संबंध नहीं है एप्लीकेशन का। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, यू हैव टू अप्लाई लॉगिन। देन एक बार लॉगिन क्रिएट होने के बाद आपको IAC यू हैव टू अप्लाई फॉर द IAC, फिर आपको IAC अलॉट हो जाएगा। देन IAC allotted, then that IAC and that your login has to be linked। लिंक करने के बाद आपके IAC कोड में जो IAC इशू किए है, कुछ बाद में कुछ लाइसेंस इशू किए जाएंगे, सब वो प्रोफाइल के साथ मर्ज होंगे। यानी आपके लिए एक स्पेशल डैशबोर्ड रहेगा, उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा, आपके लाइसेंस कितने हैं, आपके लाइसेंस पे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, जो लाइसेंस अप्लाई किया है उसका स्टेटस क्या है, व्हाट इज द पेंडिंग विद द DGFT, any query has been raised, same will you can see after login and you can see in your dashboard। if you are in the defaulter list तो सब कुछ आपको वो डैशबोर्ड में दिखाई देगा। तो आपका ये एप्लीकेशन थ्री स्टेजेस में अप्लाई होगा। ओके, नाउ आई विल शो द प्रैक्टिकल वे हाउ टू create a login, create a profile, then how to apply the IAC and how to link the IAC with your profile। Friends, initially if you open the DGFT website, this page will appear। Okay, here you have to click here and you have to log in। if it is not, if you don't have login ID and everything, you have to click here and you have to register your login। Friends, after clicking this, there will be two options, option 1 login, option 2 register। since you are the new customer, new exporter, okay, the login will not work। first you have to register। okay, click on this register। okay, click on here, then you have to feed your name, your last name, your email ID, your mobile number and your pin code, everything you have to feed here। once it is fed, okay, OTP will be generated। see, the OTP will be generated, that you have to feed here OTP। okay, and click this on this register। once it is a register, your login ID will be created। friends, once the login ID is created, okay, then you go into the login। आपका जो लॉगिन दिया है वो कीजिए, पासवर्ड डालिए and this captcha detail डालिए and you start login। this is the first stage, this is completed। okay, then you have to go for applying the new IAC। this is the same method you have to apply for the amendment of IAC। this video also useful those already having the IAC and they want to go for the amendment in the IAC। okay, now you have to apply IAC, click here। see, this application of IAC will be completed in 6 stages। there are different 6 pages will appear at the time of application from the website। first, general information, this is the basic detail you have to fill about the company, then form address, the branch detail, and then detail of the property। once you save, then you will go to the next page। see, beauty of this application is that at every stage you have to save your application। previously what is to happen, there is a lot of traffic on the DGFT website। तो आपको क्या होता है, आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता है, फिर बार बार you have to come once again, you have to start from initial and you have to complete the application, you have to submit, then error comes, all these things। now you can go by stage and you can save your application। when you go to the next steps, you will find your previous stage, your all the data whatever you have fed in the application will be there in the, so your time will not be wasted and chances of errors will be less, because you number of times you make the application, after 4 or 5 times chances of errors are more। okay, this first stage will be completed, then you have to save your data, then go to the details of proprietor,
Here add button is there. If you keep on adding, if you have more partner, proprietor or directors, then you have to feed the bank informations, then other detail, prepare sector for operations, then declaration you have to accept it, then application summary. Once again the application summary will come. You have to check the each and every detail on application summary. If it is not correct, you have to come back. You are allowed to come back. You have to you can make the changes at that particular stage and you can save it. See, you can go through the dashboard also and you can apply for the ISC. Friends, this new screen will appear where you have to make the fresh application. Then click here at fresh application. You will direct it to new page. देखिए, this is the general information basic detail you have to feed. ये feed करते वक्त आपको बहुत precaution लेना पड़ेगा. If you made any mistake here, your application will not proceed to the further steps. Okay, you will stuck here only. Therefore, whatever information I am sharing, please remember perfectly. In this page, you have to give the basic detail of your firm or your company. Okay, where you have to add the PAN number. Okay, and this PAN number has to be perfect because this PAN number, the site will check with this CBDT side or NSDL side the perfectness of that, and it will be checked on real-time basis. There will not be intervention of any manual person here. It will be online. It will be checked with the CBDT site, and all data from the PAN numbers will be checked. Therefore, once you feed the PAN number, company names, everything, the names, everything has to be matched as per the PAN number. If data mismatch, what you declare on the PAN number and what you are feeding here on this side, if doesn't match, then there will be error. Okay, therefore whatever given on a PAN number, you have to exactly feed in that. Okay, then you have to select the category of export. So after the PAN number detail you have to feed, then you go to the category. Okay, category of export you have to feed means you are the merchant exporter, manufacturer exporter, or service provider, or merchant come manufacturer exporter. Then you have to give the SIN number. See, SIN number also will be verified with the MCA site on real-time basis. Okay, that has to be perfect. Also, the data will also check with the MC side with the detail of the director. Then you have to give the GST number, and once again you have to give the mobile number and email ID for DGFT correspondence. Okay, this page you have to completely fill, otherwise it will not go to the next page. Friends, now you have to provide the basic address detail. You have to give the form, company address detail you have to feed here. Here you have to add the address, pin code. Once you give the pin code number, the system itself find out under which DGFT or regional authority your office comes. Okay, this will be automatically generated. Okay, this all this detail you have to feed here. Okay, about the company, and this is place is given here. Here you have to upload the document regarding the office proof where your office is located, residential proof, for which you can use the rent agreement, electricity bill, telephone bill, Aadhaar card, partnership deed, whatever you have. If the premises on rental, then owner's NOC also required. Okay, therefore you have to upload the document here and you have to feed the data perfectly here. Here you have to add the branch details. Okay, if you have more the branches, click here add and keep on adding all the branches. It is better to add all the branches in ISC code. Okay, then movement of goods within the branches, all these are allowed. Therefore, go for the adding all the branches here only. Here, the data from the MCA side will automatically appear here. Means if you have the four directors, the four director name automatically appear here on
this screen, because in the previous stage you have given the SIN number, right? SIN number of the company, means all data is already with the MCA. So what DGFT site will do, DGFT site will capture that data from MCA and will appear here. Then therefore you are not able to change anything, DIN number, anything, name of the director, anything here. Okay, but you have to give the director PAN number and the address, everything perfect. Here once again the director PAN numbers and all these things will be checked with the income tax website on real-time basis. If you make any error typing the name or something mistakes, then error will occur. Okay, therefore you keep on adding the director detail here. This add button is given, keep on adding the details here, and please remember what are the information I have given so that there should not be any mistake. Friends, this will be the page for your bank details. Okay, here bank details, which bank detail you have to feed? Your forex bank detail you have to feed here, in which you are going to receive the foreign exchange. Therefore give the account number, IFSC code, all these details you have to feed here. And here one more drop box is given, upload box. Okay, here you have to upload the cancel check or the letter received from the bank which gives all these details. Okay, then you fill all this detail perfectly here, because this account will be linked with your ISC code. Okay, this will be the next page of your application. Here you have to specify export sector preferred. Okay, after this click on this, save and next. It will move to the next page. This will be the next page. There are a lot of declarations are there. These are declaration. You have to click on this acceptance. Okay, then you have to proceed further. Then it will go to for this page. See, now this new system is there. Okay, you can apply through digital mode. This is a digital mode, friends. Here there are two ways are given. You attach your digital key and proceed the application, submit the application DGFT through online. Okay, for that you should have the digital key attached to your laptop or computer. And one more thing you have to remember, friends, this digital key should not be individual digital key. This should be company digital key in which you are authorized to sign the digital documents. Means आपके डिजिटल की में आपका नाम तो होगा ही डिजिटल की, आपका कंपनी का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि वो रियल टाइम वो डोंगल के साथ चेक करेगा कि कंपनी नेम इज नॉट अपीयर, it will not accept your digital signature here. Okay, and there is another method, short method you can say. You can file the application using your Aadhaar. Either Aadhaar and eSign आपने click किया, then the DGFT application will go to the your Aadhaar side. Okay, where you have to feed the Aadhaar details, your Aadhaar number, then it will generate a OTP ऑन योर मोबाइल, रजिस्टर मोबाइल. यहाँ आपका डायरेक्टर का आधार डिटेल डालिए, नंबर डाले, उसके ऊपर जो ओटीपी आएगा दैट ओटीपी यू टू फीड हियर. देन आपका एप्लीकेशन डिजिटली आधार ई साइन होके सबमिट हो जाएगा. अदरवाइज डोंगल लगाइए, डीएससी सिग्नेचर लगाइए और उसके थ्रू एप्लीकेशन कीजिए. ओके, दिस आर टू मेथड्स यू कैन अप्लाई ऑनलाइन. once and then payment gateway will come, you have to make the payments, ऑनलाइन पेमेंट्स टू DGFT. पेमेंट होने के बाद दिस रिसिप्ट विल जनरेट, मीन्स योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड. फ्रेंड्स, तो हमने दो स्टेजेस कंप्लीट कर दिए. ओके, नाउ विल कम टू द थर्ड स्टेज. मैंने कैसे बोला, पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, देन अप्लाई ISC, एंड तीसरा आपने ISC तो बनाया लेकिन आपका ये प्रोफाइल के साथ आपके ईमेल लॉगिन के साथ अटैच नहीं हुआ है, तो आपको उसको अटैच करना पड़ेगा. इफ यू आर एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग ISC होल्डर, फिर भी आपको ये नया सिस्टम में आपको ISC लिंक करना पड़ेगा. लिंक करोगे तो आपका DGFT का जो भी डेटा है, आपके जितने लाइसेंस है, MES लाइसेंस, एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG, सब
पूरा होके ये पूल में आ जाएंगे टोटली। अभी देखिए इसमें कुछ नहीं दिख रहा, आपका लॉगिन पासवर्ड क्रिएट हुआ है, सी ऑथराइजेशन इश्यूड कितने हैं, कुछ नहीं आ रहा है। आईएससी कोड इधर एक आपका आईएससी कोड डिस्प्ले होएगा ये डैशबोर्ड में, तो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर लिंकिंग ऑफ आईएससी। क्लिक हियर, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। सेम सिस्टम, लिंकिंग ऑफ आईएससी करने के लिए आपको डिजिटल सर्टिफिकेट लगेगा, अदर यू कैन यूज द आधार ई साइन, एनी मेथड यू कैन अडॉप्ट इट। ओके, तो ये दोनों में से कौन सा भी अडॉप्ट कीजिए और वापस सेम जैसे एप्लीकेशन सबमिट किया था वैसे ही इसको लिंक करना पड़ेगा। देन दिस मैसेज विल अपीयर, ISC हैज बीन सक्सेसफुली लिंक विद द यूजर। ये मैसेज आने के बाद आपका लिंक होता है। ओके, लेकिन सिंस दिस इज अ न्यू साइट, ओके, जस्ट लॉन्च 2 months बिफोर, देयर विल बी मेनी एरर्स इन दैट। कभी कभी व्हाट हैपेंस, दिस टाइप ऑफ मैसेज जनरेट्स बट डेटा डजंट कम इनटू योर पूल, लिंक में आता नहीं है, आपके प्रोफाइल में आता नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू डू क्लियर द कैचेस। हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोर में जाइए, हाँ, इट इज मोर कंफर्टेबल विद DGFT, उसमें जाइए, क्लियर हिस्ट्रीज, क्लियर कैचेस कीजिए और वापस अप्लाई किए तो 99% आपका ये लिंक हो जाएगा प्रॉपरली। फिर भी नहीं हुआ तो देयर आर 2 ways, यू कैन राइट टू DGFT दिल्ली, उनका ईमेल आईडी दिया हुआ, एंड दूसरा EDA डिपार्टमेंट उनका दिया है, वो दोनों को मेल लिखिए, एक दिन के अंदर दे रिप्लाइज टू अस व्हाट यू हैव टू डू। ओके, अब ये सक्सेसफुल अटैच होने के बाद योर डैशबोर्ड विल लुक लाइक दिस। हियर योर ISC कोड विल अपीयर, स्टेटस इट विल शो वैलिड, आप डिफॉल्ट लिस्ट में है तो आपको दिखाएगा यस नो, नंबर ऑफ ऑथराइजेशन आपको इश्यू, सब कुछ डिटेल इसमें दिखाई देगा। दिस इज वे यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर स्टेजेस माय फ्रेंड। देन आइडेंटिटी कार्ड, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में DGFT से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइसेंस कलेक्ट करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, दैट इज ऑल्सो इशूड बाय DGFT। ओके, उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करेगा। एक कंपनी के लिए मैक्सिमम 3 आइडेंटिटी कार्ड इश्यू होते हैं, 3। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी आपको क्लैरिटी आई रहेगी कि हाउ यू हैव टू अप्लाई द ISC कोड एज पर द न्यू नॉर्म्स, न्यू प्रोसीजर। I have taught you in a practical way how you have to apply all these things. Okay, this is my company, this is company do all these activity, my friends. Take the screenshot if you require any help, so we can do all this work. Thank you very much friends. Please note my numbers, everything is given here. Thank you for watching the video. Please, if you like the channel, please subscribe it, click on the ring button, bell button, so that you will get intimation as soon as new video is uploaded. Thank you very much. Thanks friends. Thank you very much.